India, also known as Bharat, is home for one of the oldest civilizations on our planet Earth, with recorded history dating back to well over several thousands of years. Today, India is blessed with a rich, diverse culture, natural resources, and the strength of over 1 billion people to flourish as an economically and technologically powerful nation alongside today's leading nations of the world. India achieved independence from the British rule on August 15, 1947, after many decades of struggle led by many leaders such as Sarojini Naidu, Mangal Pandey, Alluri Sitaram Raju, Sardar Vallabhbhai Patel, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, and so on. The Indian independence movement that was led by Mohandas Karamchand Gandhi, also known as Mahatma Gandhi, is characterized as a non-violent civil disobedience movement that ultimately led India to its independence. When India got its independence, it was stated as a constitutional monarchy with George VI as the head of state and Lord Mountbatten as its governor. And why was that? Although independent, India was still, technically, an independent dominion of the British Commonwealth. India did not have a permanent constitution. The laws were still based on older acts passed prior to independence. To drive to full governance and sovereignty, a drafting committee, led by Dr. B.R. Ambedkar and 7 other members, was formed on August 28, 1947 to draft a permanent constitution for India. The assembly met for 165 days, spread over a little less than 3 years. This was signed by 284 members of the assembly on January 24, 1950, and the constitution became effective on January 26, 1950, which the nation now celebrates as Republic Day. On this day, India ceased to be a dominion of the British. This day for India marks the beginning of a new era of Indian governance and legal system under which India was declared a sovereign, democratic, and later as a socialist and secular republic. These assured citizens justice, liberty, equality, and fraternity. Here are some prominent facts about the Constitution of India. India, the world's largest democracy and the most secular nation. Of various cultures and traditions, it is also known as the Golden Bird. Britishers ruled over India for almost 200 years. Many freedom fighters lost their life for achieving freedom, and many of them gave their entire life for revolution. Finally, on 15 August 1947, India got its freedom. This day is celebrated as Independence Day in India. After Independence Day on 23rd August 1947, Constituent Assembly proposed to form the Constitution for India. Various committees were formed to deal with various departments. The most important committee was the drafting committee, because the important work of drafting permanent constitution was given to the drafting committee. The first Law Minister of India, Dr. B.R. Ambedkar, was the chairman of the drafting committee. The members who were appointed under the chairmanship, Dr. V.R. Rao, Sir Govind Ballabh Pant, Sir Kanhaiya Lal Munshi, Sir Krishnamanai Iyer, Sir Muhammad Sadullah, Sir D.B. Kethan, Sir Gopal Swami Iyengar. The drafting committee presented its first draft on 4th November 1947 and was being read in the Constituent Assembly. Further, there were 26 November 1947, the draft was adopted by the Assembly, and the day is called the Indian Constitution Day in India. Next year, on 24th January 1950, 308 members on the Assembly signed the handwritten of the Constitution, copy of the Constitution. On 26 January 1950, it came into the effect throughout the nation. हमने अपना संविधान लागू किया। क्यों? क्या कोई खास विशेषता थी इस दिन की, या वो एक साधारण दिन? आइए जानते हैं। अंग्रेजों ने 1919 में मॉन्टेग्यू चेंज पर नाम का एक कायदा बनाया। इसी कायदे को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन की 1927 में की, पर साइमन कमीशन में कोई भी भाग नहीं, इसीलिए पूरे देश में साइमन कमीशन का कड़ा विरोध हुआ।
तो गोखले कर अंग्रेजों को भारत में लाया। बर्कनहेड ने भारतीयों को अपना संविधान खुद बनाने की चुनौती दी। इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया। संविधान बनाने हेतु सभी पार्टियों ने मिलकर एक समिति बनाई, जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को चुना और तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे विद्वान लोग इस समिति के सदस्य थे। और तो और मुस्लिम लीग ने भी अपना एक सदस्य इस समिति में भेजा था। इस समिति ने एक रिपोर्ट बनाया। ये इतिहास में प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट था। अंग्रेज सरकार ने इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया। यहाँ तक लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों की बातों में आते हुए इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता कड़वे राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वे पूर्ण स्वराज के अधिकृत मांग राष्ट्रसभा के मंच से करने पर अड़े थे। और दूसरी तरफ सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग अभी भी डोमिनियन स्टेटस की मांग पर ही अड़े थे। राष्ट्रसभा अब दो गुटों में बढ़ चुकी थी। महात्मा गांधी जी ने इस संकट की स्थिति में मध्यस्थी की और फिर ये तय हुआ कि सरकार को 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर सरकार 1 साल के अंदर नेहरू रिपोर्ट का स्वीकार नहीं करती तो राष्ट्रसभा अपने मन से पूर्ण स्वराज की मांग करेगी। देखते ही देखते 1 साल पूरा हो गया, पर अंग्रेज सरकार ने नेहरू रिपोर्ट पर कोई कदम नहीं उठाया, ना तो इस पर सरकार ने कोई चर्चा की। सरकार के इस रवैये ने मॉडरेट गुट को भी गुस्सा दिला दिया था और वे अब बिना किसी संकोच से पूर्ण स्वराज के पक्ष में आ गए थे। साल 1929 राष्ट्रसभा का अधिवेशन का आयोजन उसी लाहौर शहर में किया गया, जहां साइमन कमीशन के विरोध करने वाले लाला लाजपत राय जी को अंग्रेजों ने पीट कर मारा था। जवाहरलाल नेहरू को दूसरे गुट को संतुष्ट करने हेतु सरदार पटेल और चक्रवर्ती राजगोपालचारी को कार्यकारिणी में भी लिया गया और इसी कार्यकारिणी की सम्मति के बाद लाहौर के मैदान में पंडित नेहरू ने लाला जी को श्रद्धांजलि दी और फिर घोषित किया पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 पूरे देश में त्योहार की तरह मनाया गया। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के इन नेताओं के पास स्वतंत्रता दिवस का चुनाव करने का कोई मौका नहीं था। अंग्रेज तो देश को अराजकता और दंगों के बीच में जलता छोड़कर भाग गए थे। पर जब संविधान की निर्मित 26 नवंबर 1949 Republic Day has been celebrated every year in India on January 26 since 1950 to honor the date on which the Constitution of India came into effect. Our Constitution was written by Dr. Babasaheb Ambedkar. India is a very demonstrative nation where each citizen is allowed to choose the leader who deserves to lead the nation. Although there have been many improvements till now, few deteriorations have also come with it, such as unemployment, lack of literature, pollution and so on. All we can do is promise today to solve this type of issues together as people of this nation to make this country one of the best nations. प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में चित्तौड़ के राजघराने में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अकबर के विशाल सेना से भयभीत होकर उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। 1572 में अपने पिता की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप चित्तौड़ के राजा बने। महाराणा प्रताप अपने दादा राणा सांगा के समान एक अच्छे योद्धा थे। उनके पिता द्वारा अकबर से डर कर चित्तौड़ छोड़ना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह चित्तौड़ को अकबर के चंगुल से छुड़वाना चाहते थे, अतः उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह जब तक चित्तौड़ वापस नहीं ले लेंगे तब तक से भूमि पर सोएंगे, पत्तों पर भोजन करेंगे, वह अपनी मूंछों को ताव नहीं देंगे। वह भारत के सच्चे सपूत थे। उनकी वीरता और देशभक्ति के कारण आज भी उन्हें स्मरण किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।